Please confirm, is it audible? Yes. Please write in the chat box, friends. Is it audible or not? Yeah. Okay. So I think it's both audible and visible, friends. So let's do some more, I will say, para jumbles, so that have appeared in various exams. So let's practice some more questions on that, and one or two classes more, and then we will finish this topic. And this topic, as you know, that is very important for every exam. From general English section, you will get 2 to 3 questions from this topic. Okay. So I am covering these topics first because these topics don't require you any don't require uh, any rule to remember. Okay, so you do not have to remember any rule for solving these questions. Okay, so you can, I will say, if you are getting 20 or 25 questions in general English section, then there will be some 15 to 16 questions will be like that you can be able to do. Okay, so these can be from reading comprehension, that I will say from verbal ability part. Okay, antonym, synonym, then jumble sentences, voice, speech, idioms and phrases. So these, I will say that some 60% part of general English is like that anyone can try to attempt. Okay, and if you practice it, so then there are chances that they will be 100% correct. Okay, so let's start. So this assignment I have already uploaded. I think up to 40 questions I have uploaded, 30 40 questions in the description of the previous video also, and in this video also I will upload this assignment. Okay, so let's try some 18 questions now. So this is the first question for you, so that is 31st. Please try 31st question. So let's do this question. The Great Lakes are a group of. So as you know that these Great Lakes, you must have heard about these: Lake Superior, Lake Huron. Okay, so Holmes, Holmes. So these are known as Great Lakes. Okay, so the Great Lakes,
So that is this Great Lakes are a group of, superior is so called not because it is the largest, इससे तो नहीं होगा start, because of है group of, किसका किसका group, किसका group, that we need to understand, on the border between USA and Canada, no, group of 5 freshwater lakes in North America, yes. So R is a defining S1. The Great Lakes are a group of 5 freshwater lakes in North America. Am I clear or not? So this will be my first. Then after this, in North America, but because it is higher upstream than the others, it is used here. We do not know about for which it has been used. So this will be my first. So S will not be second. Okay. Then in North America, on the border between USA and Canada. Yes. So that is also related to this only. That is, I will say this only, Great Lakes only, on the border between USA and Canada. Okay. So this will be my second. Then see, now it has been used. It यहाँ पर यूज हुआ है, तो किसके लिए हुआ होगा, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर लेक सुपीरियर की बात कर रहा है. सुपीरियर इज सो कॉल्ड नॉट बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट, बट बिकॉज इट इज हायर अपस्ट्रीम देन द अदर्स. तो इट तो यार इसी के लिए आया होगा, सुपीरियर के लिए, तो पी और एस तो मैंडेटरी पेयर बनेंगे बनेंगे, और आर से तो स्टार्टिंग होगी होगी, यस और नो. तो आर से स्टार्टिंग हो रहा है, पी एस एक साथ आए, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो दैट इज ऑप्शन. I think you must be clear with this question. So answer for this option, answer for this question was D. Yes, Abhay. Answer was D. Yes, Badri. Okay, so let's do another question. So I think this question was clear to you. Okay, so this was the first question. Second question, 30-second. Yes, please try 30-second question now. The role of modern youth as they have to not only than that of their forefathers keep the touch of freedom aloft is far more challenging, but also keep it always lit. The proper sequence should be. Yes, please write in the chat box. Okay, so let's do this question. The role of modern youth as they have to not only, okay, so I think with P the sentence will not start. The role of modern youth than that of their forefathers. No. Keep the touch of freedom aloft. तो R तो होगा ही नहीं किसी भी हालत में. P Q भी नहीं होगा. The role of modern youth is far more challenging. Yes. S can be the first. The role of modern youth is far more challenging. किससे? किससे ज्यादा चैलेंजिंग है? Than that of their forefathers. Than that of their forefathers, as they have to only not only keep the touch of freedom aloft, but also keep it always lit. Okay, so answer will be that is logically correct. So first तो S से तो start रहेगा ही. ओके, बट यहां पर आप देख सकते हो फ्रीडम की बात हो रही है, और फ्रीडम के लिए यहां पर इट यूज कर रखा है. ठीक है, तो आर लास्ट में आएगा ही. एस से स्टार्ट होगा और आर से एंड होगा, ऐसा एक ही है. ठीक है, सो दैट इज एस क्यू पी आर. So I think you must have correctly answered this question. So answer was option C. Yes.
Do it fast. Any doubt in this question? First two questions, if you are having any doubt. Okay, so let's do another question. So I am not showing you the options here. Modern education is bookish. The harsh realities of life imparted in schools and colleges and divorced from the so-called liberal education does not help students earn their livelihood. Yes. Yes, answer from your side. Yes. Can you give me the order? I am not providing you the options. Yes, friends, can you give me the order of P, Q, R, and S? Okay, so let's do it. So modern education is bookish. मॉडर्न जो एजुकेशन है वो बुकिश है, ठीक है, एंड इज बुकिश, तो बुकिश के साथ दा तो नहीं आएगा, इज बुकिश इम्पार्टेड भी नहीं आएगा, द सो कॉल्ड भी नहीं आएगा, तो एक ही सेंटेंस बचा है मेरे पास, दैट इज आर। द मॉडर्न एजुकेशन के बारे में बता रहा है कि जो कि बुकिश है एंड डाइवोर्स्ड फ्रॉम, इससे अलग है फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ। ओके, द सो कॉल्ड, अब मैं क्यू से तो स्टार्ट नहीं कर सकता, आई कांट स्टार्ट विथ क्यू, सो आई मस्ट हैव टू स्टार्ट विथ एस ओनली। द सो कॉल्ड लिबरल एजुकेशन imparted in schools and colleges does not help students earn their livelihood. Yes or no? So your answer will become that is R P S Q। RPSQ। तो काफी सारे क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जहां पर आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो विदाउट ऑप्शन यू कैन आल्सो सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, so that is RPSQ। if you are given with this option, yes, option A was the answer। yes, please try 34th now। Okay, so let's start with this question now। Fourth question: youths are the assets and hope of a nation। Youths are the assets and hope of a nation। Okay, in making India a great, okay, steeped in old cultural values, they can play a vital role, democratic, progressive, and prosperous country, but equipped with modern scientific look। तो इसके साथ एंड होना चाहिए और इससे स्टार्ट हो रहा है। Youths are the assets and hope of a nation। Okay. Now we can start with R also। We can start with R। They can play, they is used for youths, they can play a vital role इसमें, in making India a great, okay, democratic, progressive and prosperous country। okay,
steeped in old cultural values but equipped with modern scientific look. Old cultural values, modern scientific look, एक साथ आएगा, आएगा या नहीं आएगा? ओके, वाइटल रोल किसमें रोल प्ले करवाना है? इन प्रेपोजिशन आएगा ही आएगा, यस और नो? इन मेकिंग इंडिया ए ग्रेट, तो यहां से तुम कंबाइन कर सकते हो, तो आंसर क्या बनने वाला है? आर पी एस क्यू, यस, आंसर विल बी ऑप्शन ए. Okay, friends. So that was 34th question. So I think you must be clear with this question. Let's do another question. This is the next question. Porcelain became paste होता है, became popular at the beginning of 19th century in a kiln at more than 2372 degree Fahrenheit, referred to both China and bisque dolls. Porcelain is made by firing special clays. Porcelain is used generically too. Only a few types of clay can withstand such high temperatures. Yes, I think easy question है, कर सकते हैं आप, रिलेट करो और आंसर करने की कोशिश करो. Okay, so let's do it. Porcelain became popular at the beginning of 19th century. See, this is my first statement. Last statement, only a few types of clay can withstand such high temperatures. Such high temperatures. तो इससे पहले तो टेम्परेचर की बात होनी चाहिए यार, लास्ट स्टेटमेंट से पहले जो स्टेटमेंट आएगी वो टेम्परेचर की बात करती पाए. तो पी हो सकता है, यहाँ पर ही टेम्परेचर मेंशन है, तो ये लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, ये फोर्थ नंबर पर आएगा. पी चेक कर लो, या तो बी होगा या डी होगा. क्यू से स्टार्ट कर सकते हैं, क्यू से स्टार्ट नहीं किया जा सकता. रेफर टू बोथ चाइना एंड बिस्क डॉल्स, नो, वो कोई लॉजिक नहीं बनेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद एस नाउ. एक लाइन तो ये हो गया, पोर्सिलेन इज यूज्ड जेनरिकली टू रेफर टू both China and bisque dolls. Okay, porcelain is made by firing special clays in a kiln more than this Fahrenheit. Only a few types of clay can withstand such high temperatures. So only option left, so that will be B. So temperature से इसका आंसर कर सकते थे आप. So answer was SQRP. Yes, clear friends? Is this clear or not? Yes, write in the chat box if you are clear up to these questions. Okay, so that was option B. So I think you must be clear with this कि सर इसमें जो P वाला स्टेटमेंट आएगा वो लास्ट में आने वाला है और B और D ऑप्शन बनता है, ठीक है, और बट Q से स्टार्ट नहीं हो सकता, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज S से स्टार्ट होना पड़ेगा. ओके, और ऑफ कोर्स जो R और जो आपके पास P आएगा ये एक मैंडेटरी पेयर रहने वाला, R और P. पोर्सिलेन इज मेड बाय फायरिंग स्पेशल क्लेज, इसमें फायरिंग करोगे दैट इज इन अ किल्न एट दिस टेम्परेचर. तो सर आर और पी तो क्या रहने वाला है आपका, एक मैंडेटरी पेयर रहेगा ही रहेगा. यस और नो? ठीक है, और उसके बाद S6 आएगा, RPS6. तो ऐसे कितने हैं जहां पर RP आ रहा है लास्ट में?
दैट इज ओनली ऑप्शन बी. सो मैंडेटरी पेयर से आंसर कर सकते थे इसका. ओके, सो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. यस. Human behaviors are regulated by. Regulated means controlled by. Human behaviors are controlled by, regulated by their a person's working pattern as well as living style. No. ठीक है, तो देयर किसके साथ कंबाइन हो सकता है? ओके, are regulated by their a person working pattern as well as living style. ये नहीं हो सकता. Between these selves has an adverse effect on. ये भी नहीं हो सकता. Work done is the self portrait. ये तो न्यू स्टार्ट हो रहा है. By their एक ही ऑप्शन बनता है, दैट इज एस. By their real self and social self. So this is first. Conflict. Now again the sentence, जो न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, दैट इज स्टार्टिंग बाय conflict word. So conflict is continuing the next sentence. Conflict between these selves. These selves between means real self and social self. तो S और Q तो मैंडेटरी पेयर रहेगा. यस और नो? सो S एंड Q विल रिमेन मैंडेटरी. So S and Q will remain mandatory pair. Okay. Then a person's working pattern as well as living style. Okay. Then of the person who did it. So R will be last. Work done is the self portrait of the person who did it. Of the person who did it. So R तो S6 के साथ कंबाइन रहने वाला है. तो सर S क्यों रहेगा और R लास्ट में आएगा S6 के साथ. तो क्या बचा मेरा? So that is P बचा. So P can be combined. Conflict between these cells has an adverse effect upon a person's working pattern as well as living style. Yes. ठीक है, तो अपॉन के बाद कहां पे आ जाएगा? एडवर्स इफेक्ट कहां पड़ता है? पर्सन के वर्किंग पैटर्न पर एज वेल एज लिविंग स्टाइल पर. ओके, so I think this must be clear to you. So answer will be SQPR and that is my option D. That is my option D. Okay, so I think this question was again clear to you. Let's do some more questions now. Yes.
Yes, this is the question. India is a democratic country at the hands of our representatives, but frequent elections who play political games make it a mockery at the cost of the nation. The proper sequence should be. Yes. So India is a democratic country who play political games. So who के लिए तो मुझे बताना पड़ेगा किसको मैं define कर रहा हूँ through who. So that must be representatives. So P and R will be a mandatory pair. P and R will be a mandatory pair. India is a democratic country. Okay. Now from where can we start? But frequent elections यहाँ से start किया जा सकता है. At the hands of a representative who play political games make it a mockery at the cost of the nation. So answer can be, that is, I will say QP, no, Q, but frequent elections make it a mockery, make it a frequent election, बार बार इलेक्शन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं कि मजाक बनाते हैं, make it a mockery at the hands of our representatives who play political games at the cost of the nation. Yes or no? So that is, I will say QSPR. So answer will be option D. Yes students, so I think must be clear with this. Option D होगा. India is a democratic country, but बार बार जो elections होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, make it a mockery. But frequent elections make it a mockery at the hands of our representatives who play political games at the cost of the nation. So answer will be option D. Okay, so let's do another question. Yes, this is the next question. Plato's Republic has exercised tremendous influence. He states that statesmen should on human thought and intelligence integrity because he felt that only such men, the man of supreme intelligence and impeccable, could enlighten the darker side of human nature into a positive one. The proper sequence should be. So I think again we can do this. Plato's Republic has exercised tremendous influence. किस पर influence करना है? He states, ही से स्टार्ट नहीं होगा सर, अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है. इन्फ्लुएंस, इंटीग्रिटी, बी मैन, और कोई नहीं हो सकता अदर देन क्यू. Influence on human thought and intelligence. Okay, then so now so first sentence gets over here only. He states that Plato, he states that statesmen should, that statesmen should, so according to Plato the statesmen should be men of supreme intelligence and
impeccable integrity because he felt that only such men could enlighten the darker side of human nature into a positive one. Yes or no? So your answer will become that is QPSR. So that is option B. The answer will be QPSR. So I think you must be clear with this question. So easy था ये, इजिली आप फाइंड आउट कर सकते थे. नेक्स्ट देखो यार, स्पेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. इंडिया हैज अ वाइब्रेंट स्पेस साइंस प्रोग्राम and or aid the growth of space industry in India. Indian space science program has been working formulating an industrial participation policy to covering astronomy, astrophysics and space science with cooperative Indian industries and has been. The proper sequence should be. Yes. Okay. So let's start. Let's do it, this question also. India has a vibrant space science program. Space science program है कवरिंग. इससे स्टार्ट कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद एस आर. कवरिंग एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड स्पेस साइंस. We are given with the option with R also. Okay, Q also, P also, S also. So R is more appropriate, I will say. Then here the your first sentence will end. Now next sentence will start with the. The Indian Space Science Program has been working. Has been working किसके साथ work कर रहा है? With cooperative Indian industries and has been formulating an industrial participation policy to aid the growth, help the growth of space industry in India. So I think this will be, I think, more suitable. So that will be RPSQ. RPSQ is given as option B. Yes, yes, Junaid, Abhay, are you clear with these questions? RPSQ will be the correct answer or not? So answer will be option D. Okay. So now see the next question. Show, read the first few lines of the and was at once convinced. He sent a few copies of the book to well known that he was reading good poetry, so poem. Last sentence is critics and awaited their reaction. The proper sequence should be. The proper sequence should be. Okay, so let's start this question. Show, read the first few lines of the. किसकी लाइंस रीड कर रहा था? ऑफ द पोएम करेगा, ऑफ कोर्स एस से स्टार्ट होगा, तो तभी दो ऑप्शंस उसने एस से स्टार्ट करके दिए हुए हैं. ओके, शो, रीड द फर्स्ट फ्यू लाइंस ऑफ द पोएम एंड, यहां पर हो सकता है फर्स्ट फ्यू लाइंस ऑफ द पोएम एंड वॉज एट वंस कन्विंस्ड.
वो एक बार कन्विंस था that वो himself convinced था that he was reading good poetry, so he sent a few copies of the book to well-known critics and awaited their reaction. Yes or no? So your answer will become SPRQ. SPRQ. So answer will be SPRQ. Yes, C. ओके, तो वो खुद कन्विंस हुआ कि वो अच्छी पोएट्री पढ़ रहा है, कर रहा है, तो उसने खुद क्या किया, जब वो खुद कन्विंस हो गया, ही सेंट अ फ्यू कॉपीज ऑफ द बुक टू वेल नोन क्रिटिक्स, और उनका रिएक्शन जानना चाहा, तो ये बोलना चाह रहा है वो। यस और नो? ओके, सो आई थिंक यू मस्ट बी क्लियर विद दिस। नेक्स्ट, न्यू इंडस्ट्रीज इंटरेस्ट usually supported by foreign to their employees at all offer better salaries levels of responsibility. Yes, answer from your side. Yes, students, please write in the chat box what should be the answer. Okay, new industries, new industries, see, to their employees at all levels of responsibility. So R should be the last. R last होना चाहिए at all levels of responsibility. So that is making a logical sequence. Okay, new industry supported by foreign, हो सकता है, yes, supported by foreign interests usually normally offer better salaries to their employees at all levels of responsibility. Yes, answer should be QPSR. QPSR, so that is option D. Yes, QPSR is making a sense. And R should come at the last and only option ending with R, so that is option D. Yes or no? So options will help. I'm saying if you uh, come across some difficult para jumbles, or I will say that is ordering, that is arrangement of these sentences. So options will definitely help. Okay. So what should be the last sentence? So make sure you see the options very carefully. Try to make mandatory pair. Try to make some logical sequence. Okay. Then you can answer these questions. Answer will be D. Now, next question is related to plants and animals. Next question is related to plants and animals. See here now, both plants and animals changes in form, structure, growth habits in becoming adapted to different climatic of many sorts show remarkable and even mode of reproduction
and environment, type of food supply और mode of living. Both plants and animals, इसके बारे में बात की जा रही है. Okay, both plants and animals. So let's see. Of many sorts. So we can start with R also. Show remarkable. Remarkable के साथ क्या आ सकता है? Changes. Remarkable क्या हो सकते हैं? Changes हो सकते हैं. Remarkable. Show remarkable changes in form, structure, growth habits, and even mode of reproduction. P और S तो mandatory पे रहेंगे. Changes बता रहे हैं ना वो. Form, structure, growth habits, mode of reproduction. So that is R. R आएगा first आपका, then P, S, and even more changes in form, structure, growth habits, and even mode of reproduction in becoming adapted to different climatic. Climatic किसके साथ आएगा? Climatic environment, of course, type of food supply और mode of living. तो इन्हें अपने आप को किन फैक्टर्स के लिए अडेप्ट करना है, चेंज करना है अपने आप को, ठीक है, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली, फूड सप्लाई कैसी है, मोड ऑफ लिविंग कैसा है, ठीक है, उसके रिलेटेड क्या करना है, उन्हें अपने आप को चेंज करना है, ढालना है, अडेप्ट करना है. तो यार क्यू तो S6 के साथ आएगा ही आएगा. यस और नो? तो अडेप्टेशन विल बी रिलेटेड टू क्लाइमेट, एनवायरमेंट, फूड सप्लाई, मोड ऑफ लिविंग. ठीक है. उसके बाद उसने सारा बताया हुआ है कि जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं ऑफ मेनी सॉर्ट्स शो रिमार्केबल चेंजेस इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ग्रोथ हैबिट्स. ठीक है, तो ये सारा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है. एंड इवन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. तो प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बताया हुआ है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फॉर्म, स्ट्रक्चर, ग्रोथ हैबिट्स. तो ऑफ कोर्स इसे तो मुझे कंबाइन करना ही पड़ेगा. सो पी एंड एस विल रिमेन मैंडेटरी देयर. ओके, एंड इट विल एंड विद क्यू. इट विल एंड विद क्यू. सो पी एस क्यू ये तो रहेगा ही. तो आर से स्टार्ट करना पड़ेगा. तो एक ही ऑप्शन है ऐसा, डी. Okay, so that was option D for us. Next, very easy question I will say. As heart disease continues, increasingly interested in identifying to be the number one killer, researchers have become in the United States potential risk factors that trigger heart attack. The proper sequence should be. As heart diseases continues, कहां पर कंटिन्यू हो रही है यार? इन द यूनाइटेड स्टेट्स. यस, टू बी द नंबर वन किलर. As heart disease continues in the United States to be the number one killer. Sorry, as heart disease continues to be, sorry, continue के साथ to be आएगा, the number one killer in the United States. Cross check it. Yes, as heart disease continues to be the number one killer in United States, researchers have become increasingly interested in identifying the potential risk factors that trigger heart attack.
ठीक है, तो रिसर्चर ऑफ कोर्स अगर ये नंबर वन किलर बन जाएगा हार्ट डिजीज यूनाइटेड स्टेट्स में, तो रिसर्चर्स क्या करेंगे, ऑफ कोर्स उन्हें उनका इंटरेस्ट होगा कि ऐसे फैक्टर्स को पता किया जाए जो कि हार्ट अटैक कोज करते हैं। ठीक है, सो माय आंसर विल बी दैट इज दिस, सो माय आंसर विल बी क्यू एस आर पी, बी ऑप्शन। Okay, so let's do another question. Yes, your confidence will grow as you do more practice of these questions. Okay, so we are going to do like that only, and I think in hardly one or two classes more we will be finished with we will finish, I will say, that is more number of questions in these live classes only, and we will start with new topic then. Okay, a number of linguists of language spoken by the world's 5 billion people contend that all of the thousands can be traced back to a common root language and have a common origin. Yes, a number of linguists. Contend means I will say argue karna. A number of linguists contend that all of the thousands of language, we can start with R. Linguists contend that argue that all of the thousands of languages spoken by the world's 5 billion people can be traced back to a common root language and have a common origin. तो यार S तो S6 के साथ आएगा ही, कॉमन रूट लैंग्वेज कॉमन ओरिजिन की बात कर रहा है, तो S से एंड होना चाहिए, तो दो ही ऐसे ऑप्शन है, या तो ए होगा या सी होगा। स्टार्ट कहां से कर रहे हैं, नंबर ऑफ लिंग्विस्ट कंटेंट दैट ऑल ऑफ द थाउजेंड ऑफ लैंग्वेज स्पोकन बाय द कौन कौन बोलेगा, वर्ल्ड्स 5 बिलियन पीपल, तो पी और क्यू मैंडेटरी पेयर रहने वाले हैं, पी और क्यू मैंडेटरी पेयर रहने वाले हैं, एक साथ आएंगे और एस लास्ट में आएगा, तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बना, दैट इज आर पी क्यू एस। पी क्यू एस किस में आ रहा है, देखो एस लास्ट में होना चाहिए और पी क्यू साथ में हो, इसमें तो है ही नहीं, तो ये तो होगा ही। यस और नो, तो आंसर विल बी ऑप्शन है। ओके, so let's do this question now. So Delhi's Indira Gandhi International Airport is the only one in the country uh, to have runways equipped with the CATHIB instrument landing system. This technology guides pilots to land even when visibility is cut to 50 meters. This is because finding an explanation for such failure won't be easy. However, it fails to operate often. The issue involves multiple stakeholders and a web of unclear briefs. The proper sequence should be. So this is the question. Yes, please try to solve this question.
Okay, so let's do this question also. So because they are talking about in statement sentence 1 about this, I will say, this instrument landing system. So this is a sort of, I will say, technology only. So this technology guides pilots. So of course P will be my first. P will be my first. Okay. So this technology guides pilots to land even when visibility is cut to 50 meters. तो अगर visibility काफी कम है तो इस technology की use करते हैं pilots land करवाने के लिए. However, it fails to operate often. So it technology के लिए use किया गया. Second can be this. However, it fails to operate often. ठीक है, तो operate नहीं होता ज्यादातर. Finding an explanation for such failure won't be easy. Yes. क्यों नहीं easy है? This is because the issue involves multiple stakeholders and a web of unclear briefs. Yes or no? तो क्यों तो यार S6 के साथ आएगा. This is because the issue involves, ठीक है. और क्या ये issue है? That is this failure only. इसका आपको क्या करना पड़ेगा? ये उसने क्या बता दिया है, उसके लिए ये रीजन बता दिया. यस और नो? तो सर इसका मतलब ये है कि P और S मैंडेट, P तो रहेगा ही, ठीक है, एंड इट ऑपरेट्स फेल्स टू ऑपरेट ऑफन. तो P और S तो साथ में आने वाला ही है. सो दैट इज ओनली वन ऑप्शन. सो दैट इज सी, PSRQ. ओके, सो दैट इज सी ऑप्शन. सो आई थिंक यू मस्ट बी क्लियर विद दिस क्वेश्चन. तो टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है तो मैंने P में ही बात कर दी टेक्नोलॉजी के बारे में. उसके बाद टेक्नोलॉजी विल फेल टू ऑपरेट ऑफन, तो सेकंड वही आ जाएगा. ठीक है, तो P और S साथ में बनेंगे. ठीक है, फाइंडिंग एन एक्सप्लेनेशन फॉर सच फेलियर, फेलियर की बात कर रहा है तो फेलियर की यहां भी बात कर रहा है. तो सेकंड और S और R भी मैंडेटरी पेयर बन जाएगा. फेलियर की बात हो रही है दोनों में. फिर दिस इज बिकॉज द इशू इन्वॉल्व्स दिस. ओके, so I think must be clear with this question. Okay, so see the next now. The Australians were very proud and felt privileged in their country to host the Olympics 2000, as it elevated their stature in the eyes of the world at the threshold of the new millennium. The proper sequence should be. Australians were very proud and felt privileged, I will say, to host the Olympics 2000 in their country. Yes, इसे combine किया जा सकता है. To host the Olympics in their country, as it elevated their stature in the eyes of the world at the threshold of the new millennium. So answer will be QPRS. So answer will be option A. Yes or no, students? So I think you must be clear this. Very easy. Felt privileged to host the Olympics in their country as it elevated their stature in the eyes of the world. So answer was option A. Ram has an important examination to sit for in a few weeks' time, but he could not concentrate. What he saw was not very nice. He was very pale. He sat down to prepare for it. After a while, he looked at himself in the mirror. He said to himself, "What I need is fresh air."
Yes, can we do it? Junaid, QP is a mandatory pair. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में. ओके, डू दिस क्वेश्चन. राम का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है आ, कुछ हफ्तों में. तो फर्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? बट ही कुड नॉट कंसंट्रेट. बट वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है. कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था. टेंसेस में भी चलेंगे ऑफ कोर्स. बट ही कुड नॉट कंसंट्रेट. ही सैट डाउन टू प्रिपेयर फॉर इट. सॉरी. सो वी विल स्टार्ट विद दिस आर. राम हैज एन इंपॉर्टेंट एग्जाम है उसका कुछ हफ्तों में. ही सैट डाउन टू प्रिपेयर फॉर इट. तो उस एग्जाम के लिए वो बैठ गया प्रिपरेशन करने के लिए. एग्जाम की बात कर रहा है. बट ही कुड नॉट कंसंट्रेट. जब वो बैठ गया तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाया. यस और नो? पढ़ने बैठा तो कंसंट्रेशन नहीं बन रही है. देन उसके बाद क्या कर रहा है? आफ्टर अ व्हाइल ही लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर. वो मिरर के पास गया कुछ देर के बाद. मिरर में ही देखा होगा. व्हाट ही सॉ. मिरर में देख के बोलो. व्हाट ही सॉ वाज नॉट वेरी नाइस. ही वाज वेरी पेल. He said to himself, what I need is fresh air. So R और P मैंडेटरी पेयर बनेंगे. Yes or no? So RP, then you will be having SQ. Answer will be RP, that is in option B. Okay, friends, so I think you must be clear with this. So let's do some more. Can anyone also triumph and let for a long time suppress truth permanently? The proper sequence should be. The proper sequence should be. कैन एनी वन. वेरी इजी, आई विल से कैन एनी वन. तो फॉल्सहुड की बात कर रहा है और ट्रूथ की बात कर रहा है यहां पर. क्या कोई सच को ज्यादा देर तक स्प्रेस कर सकता है? कैन एनी वन स्प्रेस ट्रूथ फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड लेट फॉल्सहुड ट्रायम्फ परमानेंटली? यस और नो? यस और नो? सो दैट इज, आई विल से, क्या ऑर्डर बना आपका? दैट इज एस आर क्यू पी. तो माई आंसर विल बी ऑप्शन सी. प्लीज चेक इट. So option is C option. Okay, so I think students you must be clear with these questions. So ये मैंने कुछ questions discuss किए हैं. So I think hardly there will be some. I will say one or two classes more on this topic as this topic is important. And if you are having 25 questions, let's say for general English or 30 questions, so you can expect that 3 to 4 questions will be from this only. And you just need to practice these questions. You just need to know the tricks and just need to practice and read a lot. Okay, so then only can you can attempt these type of questions. Okay, so I will meet you in the next class. Okay, so we will meet on Monday again for this I will say this regular non technical subjects that we are covering at 10:30 a.m. on Monday, Tuesday, Wednesday and Friday. So let's meet on Monday at 10:30. So till then, keep watching your PDA, keep preparing. Thanks once again.